चेक करो आसला नहीं अनन्या चेक करो से लाइट का दल रे से पूरा डाउन बटन बस ओके काली तुम एक्सेस रो नोट्स लिखिल स्टेप गुड़ा आज तार मु प्रैक्टिकल आरंभ करुच्ची राइट समस्त ऑडियो वीडियो आसला मैडम आसला आप ऑडियो वीडियो आसुची चेक करो ओके कार क्या तो घर में है जाओगे लेकर जाओगे नहीं ऑनलाइन में तो बढ़ गया ऑनलाइन में बढ़ गया घर में जाकर निकू को फोन कर देना निकू चाबी दे देगा तुमको अरे मेरा तो भी 1 घंटा लगेगा अभी शुरू कर रहा हूँ क्लास ठीक ओके So working access is known as RDBMS format. RDBMS format. So RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS, the word stands for Relational Database Management System. Sorry, boss. Okay. So, तर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जार खाली नोट्स लिखा होता तार 5टा मेन प्रोग्राम रो हमर 5टा मेन प्रोग्राम नंबर 1 एमएस वर्ड नंबर 2 एमएस एक्सेल नंबर 3 एमएस पावर पॉइंट नेक्स्ट एमएस पब्लिशर एंड द नेक्स्ट वन एमएस एक्सेस ओके तो एक्सेस रो बिगिनिंग में हम स्टार्ट करछे काली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम काली जार नोट्स लिखथलो तार बर्तन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करछे ओके सुबह और विजिबल तो तुम लाइव सेशन भी चली तुम चाहिए यूट्यूब ऑन करो यूट्यूब रे लाइव सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गला ओके टिके बतई दियो यूट्यूब चैनल केमती सब्सक्राइब करेंगे केते तुम अच्छी सब सब्सक्रिप्शन अच्छी तो तुम कह दियो केमती करेंगे सही तुम देखे दियो केमती सब्सक्राइब करेंगे तुम जहाँ आम क्लास सब ऑनलाइन लाइव भी चले सो दैट तुम पछरे रेफरेंस भी नहीं पारियो
ओके सो आम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो वन ऑफ द प्रोग्राम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आम तादरे काम करने जाऊे सो एक्सेस प्रोग्राम रे काम कर बेसिक फंडा आम जो तार बेसिक मीनिंग कौन ये ऊपर देख पार्थ्व ये मोर कौन लिखाई RDBMS फॉर्मेट so let us first understand what is RDBMS so RDBMS रो normal dictionary meaning है relational database management system so database with a relation so database with a relation से concept रो हमरा आउ गोटे टर्म में derive करबा what do you mean by a database जदि database with a relation हम बुझुछु let us first understand after all what is a database माने हम कोन बुझछु so usually database means what a collection of related information put inside a table in a particular structured order गोटे टेबल रे जे कोनसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो किंबा इंडिविजुअल बीइंग हो ता विषय रे कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे आमे जो सजे की रखुछु ताकू कह जाय डाटाबेस सपोज टेक ए एग्जांपल you have been asked to create a database of some students in a institution सपोज तुमको क्वेश्चन पचरा गला जे कोनसी गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट मानकर डाटाबेस तैयारी कर सो जस्ट थिंक स्टूडेंट मानकर डाटाबेस रे हमर कोन कोन आसी पारे हम गोटे टेबुलर फॉर्मेट करबा समस्तंकर स्कूल की कॉलेज कैरियर रे टेबल को तैयारी करथिबो ग्राफ पेपर टेबल हमर वर्टिकल पार्टीशन हम ता कोन कहू कॉलम horizontal partition ता कोन कहू रो कॉलम मिसिकरी टुगेदर दैट इज नोन एज ए टेबल so usually database is made by tables suppose student मान क्षेत्र डाटा शीट करछे प्रथम रो रो प्रथम सेल आई मीन फर्स्ट हेडिंग रे हम कोन पुट करबा नेम ऑफ द स्टूडेंट then next heading the father's name next आसीओ mother's name then city state country class school section roll number date of birth mobile number etc so it comes around 15 to 20 headings so as per the heading आम रो अनुसार डाटा इनपुट करके जीवा आज्यूम कर गोटे स्कूल ले 1000 स्टूडेंट्स आर रीडिंग तेना 1000 स्टूडेंट कर डाटा शीट तैयारी हला ना तो ना लिखले फादर्स नेम लिखले डेट ऑफ बर्थ लिखले एटसेट्रा सपोज स्टूडेंट नंबर 10 श्याम सुंदर तुमको इंस्टेंटली कह गला व्हाट इज द स्टूडेंट फादर्स नेम आ गोटे स्टूडेंट्स रो व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ यू नो आमर जो स्टूडेंट्स रो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आम लुक आउट करूँ एट सम रो और सम कॉलम डाटा जार देया बट व्हिच कॉलम व्हिच रो आम तो एट ए टाइम देखि पारनु आम स्क्रॉल करी कॉलम अनुसार खोजिबा कि रो अनुसार खोजिबा अल्टीमेटली यू रीच एट द पॉइंट एंड गेट द थिंग दैट यू वांट टू नो बट दैट इज ए वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस टाइम टेकिंग एथि लागुची योर डाटाबेस इज सो लॉन्ग आमर डाटाबेस एते बड़ हो जाउची आम गोटे पर्टिकुलर डाटा खोजिक बाहर करा को बहुत समय वेस्ट हो तेणु आम बर्तमान से डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर आमर आहरी सर्टकट प्रोसेस रे जल्दी कामटा हो कारण देख तुम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ो से देख टेबल क्रिएशन भी करके डाटाबेस कर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो तुम चैप्टर आसो एक्सेल पेज इज मेड अप ऑफ टेबल्स सो एक्सेस रोल कौन आसला एक्सेस रे भी से डाटाबेस करूछु वर्ड रे भी टेबल भीतर डाटा लिखवा डाटाबेस तैयारी हला एक्सेल इटसेल्फ इज ए डाटाबेस किंतु वर्ड रे टेबल करके डाटा शीट तैयारी करो एक्सेल रे टेबल भीतर डाटा लिखो एते टाइम टेकिंग लागुची डाटा खोजरा बेलू यू विल गेट इरिटेटेड विरक्त लगुची हमको से एक्सेस रो रोल आसला आमे वर्ड हो किंबा एक्सेल हो गोटे डाटाबेस को गोटे सिंगल टेबल रे करथले ये जो कांसेप्ट आसला डाटाबेस विथ ए रिलेशन what do you mean by that so instead of putting all the headings in a single table what you do you divide it मु तो तुमको बर्तमान जो 10टा कि 15टा हेडिंग कहली ताको हम गोटे टेबल रे न रखी कि हम 4टा कि 5टा टेबल करबा सब टेबल भितरे 4टा कि 5टा हेडिंग दबा एवं प्रति टेबल भितरे गोटे कॉमन फील्ड देइकिनी ता भितर रिलेशनशिप क्रिएट करबा एवं एबडा प्रोसेस रे हम रिलेशनशिप तैयारी करबा तमे जे कोनसी टेबल रे थाई कि
नेक्स्ट टेबल डाटा को व्यू करिपरिबो देखि परिबो सो व्यू करिवा देखिबाटा को प्रोसेस को कौन कहा जाए एक्सेस सो एक्सेस मीन्स व्हाट कंट्रोल you are in one place but have the control to see many things together. So that is Access is all about. And Access comes under one of the main prime program, as I told you earlier, that is known as Microsoft Office. ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମମାନେ ଲର୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆମର 5ଟା ସବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ପବ୍ଲିଶର ସୋ ଆମର एक्सेस चैप्टर ही मैं स्टार्ट करूँ ओके चलो भीतर पड़ बस चलो चलो बस ये सामने किए बसनी भीतर को आस ना एपट को आस सेपटे भी जगह अच्छी चलो ओके सो एक्सेस रो बेसिक कॉन्सेप्ट समस्त बुझल सो बर्तमान मु एक्सेस प्रोग्राम ओपन अप करने जाऊँ अच्छा जो मैंने नुआ आज जॉइन कर कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड माउस आइडिया अच्छी तो एक्चुअली बाय रूल मोर पचारे उचित मु तुमको पचारि पारनी कारण जेहेतु तुम फास्ट क्लास बहुत भी पिला आसती से लाइफ रे फास्ट टाइम कंप्यूटर सामने बसती से बाय रूल समस्त पचार एटलिस्ट कीबोर्ड मॉनिटर माउस टिके जानी ना सो दे कैन स्टार्ट अप द लेसन डायरेक्ट स्टार्ट कले चलो ओके डन सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्राम जस्ट स्टार्ट करुच्ची देख काली जोटा लिखुला से प्रैक्टिकल ना देखुची ओके देखा विजिबल ओके कल टू चश्मा नहीं आस चश्मा घर कहीं रख आखि खराब टे चश्मा आण ना ओके एनीवे सो देखो बर्तन तुम स्क्रीन सभा तले जो बॉटम लाइन देखुच ये जो ब्लैक लाइन टा आपको हम कौन कहूँ टास्क बार टैक्स टू डू एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड रे चार्टा जो व्हाइट डॉट देखा कौन कौन स्टार्ट मेनू फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर वर्क बर्तमान स्टार्ट मेनू पाख को माउस स्लोली आनिकी ये राइट बटन प्रेस करुच्ची गोटे पॉपअप बॉक्स बाहर तादे तुम कमांड पाइल कौन सर्च उपर लेफ्ट की प्रेस कली तले क्लियर कट से मेसेज दौची आमे कौन सर्च करिबा आमे कौन सर्च करिबा वर्तमान किसी करा जाई परिबो नाही कारण मु ऑलरेडी लाइव क्लास रे बसी सारे मैं उठी परिबी ना सरला बेलू ना राति 10 तुमको 3:30 रे आसे कहती तुम आस 5:30 रे तेणु आउ बर्तमान मु उठाटा संभव नुहे राति 10टा बेलू तुम कम बुझे पारि कम कौन कर बर्तमान कारण तुम पाखे बसिक तुम गोटे प्राक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देखी मुझे कि तुम तो एत लेट्रे आस कौन कर खरा सोया किसी नहीं मतलब एक्सक्यूज कर मु लाइव क्लास रे बस बस चाहूँ बस कि कम ही ना किसी ओके लिसन तुम बर्तमान ये आम टे साइलेंट प्लीज साइलेंट टिके रहिबो कि टिके साइलेंट रो यार मुझे क्या सारे गोटे सेकंड कथा करे आरंभ कले तुम साउटिंग स्टार्ट हो जाउछ व्हाट इज दिस तो बर्तमान आम स्टार्ट मेनू को आसिक स्टार्ट मेनू पर राइट बटन प्रेस कले राइट बटन प्रेस कला परे एठी हमर कोन पाइले सर्च बॉक्स रे हम प्रोग्राम रो ना लिखुचे एक्सेस ओके ऊपर हमर कोन शो कला एक्सेस ऐप टा शो करूची प्रोग्राम टा एठी हमर शो करूची तो एक्सेस इटी शो कला एक्सेस प्रोग्राम टा हमें ओपन अप करया पे कमांड कोन दोछे एंटर की सो एंटर मींस व्हाट ओके ओके सी जेतला एक्सेस प्रोग्राम एठी ऑन करूची यू विल गेट ए टोटल डिफरेंट स्क्रीन मोटे क्विक रिकैप देखे दोछी एटी सपोज धर तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कल तुम कौन देख ब्लैंक पेज तुम बर्तमान ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर
ये आम कौन देखुचे गोटे टेबुलर फॉर्मेट डायरेक्ट आसूची सिमिलरली जदि मुझे पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करी you see a blank presentation. So এটা দেখিবার মেন রিজন হলা তুমি ওয়ার্ড প্রোগ্রাম অন করো एक्सेल खोलो पावर पॉइंट खोलो तुमको डायरेक्ट गोटे प्लेटफॉर्म मिलूची इनसाइड व्हिच यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डाटा व्हेयरएज जेते मुझे एक्सेस ओपन करूची नथिंग डूइंग कारण एक्सेस रो बेसिक लॉजिक और डाटाबेस क्रिएशन तो स्टेप नंबर 1 आम एक्सेस ओपन कला परे हमको फास्ट डिफाइन करिया पड़िबो कहार डाटाबेस तैयारी करियो वर्ड हो एक्सेल हो पावर पॉइंट हो अलग प्रोग्राम रे आम आग फाइल तैयारी करूने काम सरला परे फाइल तैयारी करछे टेक्निकली जहाँ भी प्रोग्राम रे काम करछे व्हाट यू आर डूइंग यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फाइल it may be word file it may be excel file it may be powerpoint file so वर्ड के एक्सेल पावरपॉइंट प्रोग्राम रे हमरो ब्लैंक पेज आसिला कि ब्लैंक टेबल आसिला हमें डाटा एंट्री कर साला परे एंड ऑफ द जॉब हमें ताको कमांड दे कि कंप्यूटर गोटे लोकेशन रे स्टोर करछु सेव करछु सो फाइल हैज बीन क्रिएटेड बट एक्सेस यू मूव एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट ऑर्डर इन एक्सेस व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू क्रिएट ए फाइल फर्स्ट फाइल मीन्स जहार डाटाबेस तैयारी करबा हमको तानार गोटे फाइल टे तैयारी करिया पड़िबो and as I told you earlier database contains what tables तो database हे साला परे हमें तांडर टेबल तैयारी करिवा देन रिलेशनशिप करिवा देन डाटा एंट्री को प्रोसीड हम करिवा सेति पई एक्सेस ओपन कला परे एटी स्टेप नंबर 1 एटी हमको फास्ट क्लिक करिया पड़िबो ब्लैंक डाटाबेस ओके तो ब्लैंक डाटाबेस ऊपर माउस प्रेस करूची एटी देखो मझिर गोटे बॉक्स आसिला सेटा हम पचाउची नेम ऑफ द फाइल मतलब जो डाटाबेस तैयारी करबा से डाटाबेस रो ना कोन सपोज क्वेश्चन इज हमें कहार डाटाबेस करबा सम स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सपोज एट मु स्ट्रेट वे लिखुची फाइल ना कोन दली स्टूडेंट डाटा शीट ओके स्टूडेंट डाटा शीट देखिए नेक्स्ट का ऊपर माउस क्लिक करूची क्रिएट सब टॉप ऑफ द लाइन एटी देखो बर्तन फाइल ना आसी गला स्टूडेंट डाटा शीट ओके एंड डाटा शीट कंटेन्स व्हाट टेबल्स डाटाबेस कंटेन्स व्हाट टेबल्स बाम पटे देखो एठी आसी गला टेबल 1 तुमको टेबल मानुअली तैयारी करे दरकार नहीं वंस डाटाबेस तैयारी हे गला ऑटोमेटिकली से टेबल तैयारी करे को हम नेक्स्ट लिंक से गला बराबर दिस इज फर्स्ट टेबल फर्स्ट हेडिंग टा कोन देखुची आईडी एठी नेक्स्ट देछि क्लिक टू ऐड मतलब से हम क्वेश्चन पचाउची प्रथम टेबल रे फर्स्ट हेडिंग में कोड स्टार्ट करे बाय डिफॉल्ट हमरा आईडी रोची ताकू छाडी के आबे फर्स्ट फील्ड टा कोन दबा एटी पिला मिस्टेक करती ब्लू बॉक्स भीतर लिखती बट डोंट डू दैट इज रॉन्ग प्रोसेस ये जो येलो बॉक्स देखुच ये डबल क्लिक कर ये जो येलो बॉक्स येलो बॉक्स डबल क्लिक करो ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट कर व्हाट इज इट हैं अरे क्लास सरू टिके यार क्लास ओके तो बर्तमान जो येलो बॉक्स देखुच ये डबल क्लिक करो डबल क्लिक कला परे ये कमांड कौन पाइल शॉर्ट टेक्स्ट तापर लेफ्ट की प्रेस करो बर्तमान सिलेक्शन मोर कोड रहा फील्ड 1 तमने हमको क्वेश्चन पचरा प्रथम टेबुल प्रथम हेडिंग टा कौन दबा जोटा कि टेक्निकली हम कौन कहूँ फील्ड ईच हेडिंग इज नोन एज व्हाट फील्ड सो फर्स्ट फील्ड रो नाम बर्तमान दउची एस नेम एस स्पेस नेम सो दैट इज एब्रिविएटेड वर्ड स्टूडेंट नेम बट टेक केयर जब तुम एब्रिविएशन रे किछि लिखुछ नो कॉमा नो हाइफेन नो फुल स्टॉप कॉमा हाइफेन फुल स्टॉप किछि दबो नै सेटा आस्की कैरेक्टर को कन्वर्सन हो एरर आसीबो
but you can put like this, that is S space name. Okay, next field को जिबा, enter key, again short test, बर्तन next put कौन कोर्ची, father's name, again enter, फिर से short test, next field put कौन ची, mother's name. So first कौन दली, student name, तापरे father's name, तापरे mother's name, next, এটা मैं कौन put कोर्चे, city, state, country. So table number 1 आम ताधरे ये 5टा फील्ड दौचे, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, स्टेट एंड कंट्री. जदि नोट डाउन करने चाहूँ से लिखि पार फास्ट टेबल में कौन कौन फील्ड दब. Okay, so this is table 1 and these are the fields, I mean headings. ओके, सो लॉजिक है तुम टेबल रे फील्ड दे सारा पर कौन सी हेडिंग तले इनिशियली किसी डाटा एंट्री करिवो नहीं. डाटा एंट्री केतरा हबो जेतो तुम मल्टीपल टेबल करी गोटे प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश हेसबो तापर हमर डाटा एंट्रीटा ऑटोमेटिक प्रोसेस रे बुंगन करिवो. बराबर. तो बर्तन टाइम पुट कले फील्ड देले आकु बर्तन क्लोज करिवो. क्लोज कला को देखो दीटा क्रॉस साइन पाउछ, ऊपर गोटे रेड क्रॉस साइन अच्छी, तले गोटे क्रॉस साइन अच्छी, आकु क्लोज करबनी. एटा पूरा टोटल प्रोग्राम टा बंद हो जिवो, आई मीन सॉफ्टवेयर टा क्लोज हो जिवो. आमे टेबल टा को बंद करिया को एटी कमांड कोन दले, टेबल टा को एटी हम बंद करिया को एटी हम कमांड कोन दोचे, जो तल क्रॉस आकु क्लिक कले नेचुरल शेप कोन पचरला, सेव करके बंद करबन नहीं. आमे ब्लैंक टेबल कर देथिले बट विदाउट एनी नेम. आमे डाटाबेस रो ना देइछे बट टेबल तो किसी ना देइने, सेता इट शुड बी यस यस करके एठी बर्तन मु सपोज ना देली तर S1. तुमको जे कोन से सीक्वेंस एनी ऑर्डर रे तुम ना दे पार. ओके, S1 करके ओके कली. नाउ सी जोटा हमर टेबल 1 देखुतरा बर्तन ना कोन आसला, S1 आसला, किंतु गोटे टेबल रे त हमर पूरा डाटाबेस होबनी. आमे एटलीस्ट बर्तन मु तुमको तीनटा टेबल ऊपर देखेबु जाउछी. सो फर्स्ट टेबल जॉब डन. बर्तन अगेन गले कोटू को क्रिएट मेनू, ये जो ऊपर हमें देखुचे फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स, आको हम कौन कहूँ मेनू बार और यू कैन कॉल इट कमांड बॉक्स. टू गेट द जॉब डन आमको ईच एंड एवरी केस रे गोटे पर्टिकुलर मेनू को जीवा पड़े, मेनू अंडर गोटे टूल को चॉइस करिया पड़े. बराबर. सो बर्तन मु को मेनू को आसली क्रिएट, क्रिएट तो एटी कमांड कोन पाउचे टेबल, जितरे क्रिएट जाय कि टेबल ऊपर माउस एटी प्रेस करूचे, एटी पुन टेबल 1 देखला माने सी हमको लिंक देला how to create table number 2, how to create table number 2, second table टा केम तैयारी करिवे. सो अगेन फर्स्ट फील्ड द आईडी आसी, डबल क्लिक करली, शॉर्ट टेस्ट. बर्तन कमांड कोन कहूची, जेतरा हम फर्स्ट टेबल लो सेकंड टेबल को जाउछे, फर्स्ट टेबल लो सेकंड टेबल को जाउछे, फर्स्ट टेबल लो एनी हेडिंग आगो सेकंड टेबल ले रिपीट करो, देन फर्स्ट टेबल रे जो जो हेडिंग दिया जाए ना से को दियो. मु गोटे फील्ड काई रिपीट करछि टू मेक ए रिलेशनशिप. हमर कांसेप्ट कोन रिलेशनशिप तैयारी करबा ना. सो रिलेशनशिप करे पे दैट शुड बी वन कॉमन फील्ड बिटवीन ऑल द टेबल्स. सो 1 2 भितरे मु बर्तन कॉमन दली सिटी. ओके, अगेन एठी एंटर की प्रेस करछि, फिर से शॉर्ट टेस्ट आसली. बर्तन फर्स्ट टेबल रे कोन कोन फील्ड देनी, दैट इज नेम ऑफ द स्कूल. अगेन एठी हमर कोन आसला क्लास, अगेन एठी हमर कोन आछे दिस इज सेक्शन. नेक्स्ट फील्ड हमर कोन आछे रोल नंबर. ओके, सो
फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल भितर आम ये कॉमन कौन रखिले सिटी ता बाद फर्स्ट टेबल जो फील्ड देनी लाइक स्कूल क्लास सेक्शन रोल नंबर पुट कले so second table सरला but once again simply close it and save it but do not put any data there कौन सी data entry हबनी now I am going to close table number 2 and save it in the name of S2 and press OK so बर्तन हमारा second table तैयारी है now move to table number 3 create को टू कैसे टेबल अगेन बर्तमान लॉजिक हो सेकंड टेबल में थर्ड टेबल को जाऊे सेकंड टेबल जेकोसी हेडिंग थर्ड रिपीट कर ता बाद फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल जो हेडिंग दियानी से दिया सो ये पुणी अगेन डबल क्लिक कली अगेन सर्ट टेस्ट आसली सो सेकंड थर्ड भितर ये मुझे कॉमन रखुची रोल नंबर ता बाद मोर फर्स्ट और सेकंड भितर जोड़ा देनी लाइक this is height weight vision date of birth okay common रखले कौन रोल नंबर जिते तुम टेबुल आडभांसमेंट जाऊ प्रीवियस टेबुल गोटे फिल्ड को ही रिपीट कर सेटा को अलग कौन टेबुल रिपीट कर ना डुप्लिकेट एंट्री हो ओके এটা খালি রিলেশনশিপ পারপজ में हमें कॉमन दे देके मूव ऑन करछे सो रोल नंबर हाइट वेट विजन डेट ऑफ बर्थ सो ये प्रोसेस रे यू कैन क्रिएट एज मेनी टेबल्स एज यू वांट नो लिमिटेशन फिलहाल हमें तीनटा टेबल ही लिमिटेशन रखिबा बर्तमान को क्लोज करली एंड आपको सेव करछि एवं नाम दोछि S3 एंड प्रेस ओके ओके सो मोर तीनटा टेबल बर्तमान आसी गेला हम बर्तमान तीनटा ब्लैंक टेबल करछि बट कौन सी टेबल अंडर रे किसी डाटा एंट्री कराए सो डाटा एंट्री केतर कराहब जेतर जो तीनटा टेबल करिचे आमे ताको प्रॉपर्ली रिलेशनशिप लिंक रे रखि परिबा सो टू क्रिएट रिलेशनशिप हां वन मोर थिंग फर्स्ट थिंग जानलो तमे टेबल जा हेडिंग दोछ जेते एब्रिविएटेड वर्ड दोछ कौन सी एब्रिविएटेड वर्ड भितर कॉमा फुल स्टॉप हाइफेन दिया हबनी एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर गोटे टेबल लो काम कर साला परे ताको क्लोज करिवो इवन इफ ओपन अवस्था रे जदि आउट टेबल काम करिवो नेक्स्ट फंक्शन ता काम करिवोनी एटी कोन कले वन बाय वन मु टेबल तयारी करूची ताको क्लोज करूची जेतो दरकार हम ता पुनी रीओपन कर परिबा किंतु गोटर काम सला पर एंड दैट शुड बी क्लोज कोड को आसिले क्रिएट मेनू टेबल तयारी करथले बर्तमान रिलेशनशिप करे पे हम कोड जिबा डाटाबेस टूल्स रिलेशनशिप करने आम कौट को आसिले डाटाबेस टूल्स भितर ये कमांड पाचे रिलेशनशिप्स जमी क्रिएट भितर टेबल तैयारी करने लिंक पाते ये आम डाटाबेस टूल्स भितर आम रिलेशनशिप करने लिंक आमको मिलूँ सो डाटाबेस टूल्स रिलेशनशिप्स सो दिस इज द रिलेशनशिप बॉक्स क्या भितर रिलेशनशिप करवा राइट हैंड साइड मार्क कर तीनटा एक टेबुल लिंक देखा जोटा कि आम टिके आगु ऑलरेडी तैयारी कर सारी सो चूज वन बाय वन फर्स्ट आर सिलेक्टेड सेकंड आर द सेकंड वन एंड थर्ड आर द थर्ड वन सो रिलेशनशिप बॉक्स भीतर को टेबल आसिला ता माने नुहे जे टेबल भीतर रिलेशनशिप हे गला यू आर सिंपली डिफाइनिंग यस दीज आर द टेबल विद इन व्हिच यू आर गोइंग टू क्रिएट ए रिलेशनशिप ओके नाउ आको क्लोज कले नाउ सी आमर प्रति टेबल फर्स्ट फील्डटा कौन देखा आईडी तुम ना टेबल टेक आगु करूल फर्स्ट फील्डटा बाय डिफॉल्ट आम कौन आसला आईडी आसला सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की प्राइमरी की क्या बुझाऊँ स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 तार स्टूडेंट रो आइडेंटिफिकेशन नंबर एवं फर्स्ट सेकंड भीतर कॉमन कौन रख सिटी 2-3 भीतर कॉमन कौन रख रोल नंबर सो जो प्राइमरी की को छाड़ी आम सेकेंड टाइम आउ गोटे रिलेशनशिप कॉमन फील्ड रखीचे ताकू कह जाए फॉरेन की जोटा बाय डिफॉल्ट कीटा आसूची सेटा कह जाउची प्राइमरी की आम जोटा कस्टमाइज देइछे ताकू कह जाए फॉरेन की
एटी गोटे जिनस मन रख मोर डाटाबेस गोटे टेबुल हो पारे दुटा टेबुल हो पारे तीन टा टेबुल हो पारे मोर दैन 3 टेबुल भी हो पारे सो पॉइंट इज जदि मोर डाटाबेस रे दुटा टेबुल करवा मोर फॉरेन की रो कोनोसी दरकार नहीं कारण फास्ट टेबुल रे गोटे कॉमन आईडी आसुची सेकंड टेबुल भी बाय डिफॉल्ट कौन आसला आईडी सो 1 to 2 2 to 1 ऑटोमेटिकली से कोरिलेट करिवो बट इफ योर डाटाबेस कंटेन्स मोर देन 2 tables apart from the primary key foreign key is required पॉइंट बुझ पड़ला जदि डाटाबेस रे दुई रु अधिक टेबुल रहइबो हमको प्राइमरी की बाद फॉरेन की भी दबाव पड़ो कि जो डाटाबेस रे हमर दुई टेबुल रहिला वन प्राइमरी की विल डू लिंक नहीं जो सो आमर तो तीन टेबुल अच्छी तो आम फॉरेन की भी रखीचे सो बर्तमान मो फास्ट प्राइमरी रिलेशनशिप पकेबी वन आईडी उपरे लेफ्ट की प्रेस रखी स्लोली लेफ्ट टू राइट को धीरे धीरे ड्रैग कर टिल यू रीच एट दिस पॉइंट ए पॉइंट रे पहुंचली क्रिएट ये कौन आसला S1 आईडी S2 आईडी गोटे जिनस मन रख एक्सेस है वन वे एंट्री वन वे एंट्री मैंने कौन तुम एक्सेस को छाड़ी अलग जेको कम कर वार्ड की एक्सेल पावर पॉइंट तुम मिस्टेक जिते थर है तुम बार बार से जगह करेक्शन कर बट एक्सेस रे नथिंग डूइंग एक्सेस रे सब बड़ डिमेरिट है तुम भूल करुव सी तुम कह लास्ट पार्ट रे तुम डाटा एंट्री कर तुम ब्रेक करके छाड़देव से यू हैव टू टेक ऑटमोस्ट केयर मुझे हाथ में ड्रैग करुच्ची इट इज क्वाइट नेचुरल हाथ एपट सेपट हो जाए आमको लगुच आम आईडी आईडी को कि आमको आईडी को बाय मिस्टेक आम सीटी पकईदेलु जोटा कि इंस्टांटली आमको एक्सेस जड़ेलानी यू हैव चूज इन ए रॉन्ग पाथ जो आम डाटा एंट्री करवा 1 to 2 को लिंक ऑप्शन हेनी से माय सजेशन तुम ए ड्रैग करुच ये देख मुझे ड्रैग कली ये क्रिएट करने आगु केयरफुली देख कौ टेबुल कौ फिल्डटा आसी मोर फास्ट टेबुल कौन फिल्ड देती आईडी सेकेंड टेबुल कौन रखी आईडी तो मुझे क्या भितर पकेबी वन आईडी को टू आईडी सागर सो ये बर्तमान वन रो भी आईडी देखुचे टू रो भी आईडी सो आई एम कन्फर्म आई एम ऑन द राइट पाथ यस और नो या तो ओके सो नाउ क्रिएट डन नाउ सेकेंड रो आईडी को बर्तमान रिलेशन क्या सारे पकेबा थर्ड रो आईडी को बर्तमान सेकेंड आईडी को ड्रैग करके कौटी पकेली थर्ड रो आईडी ऊपर पुणी 1 सेकेंड चेक कर टेबल 2 आईडी टेबल 3 आईडी यस अगेन यू आर द राइट पाथ ना अगेन क्रिएट सो प्राइमरी रिलेशनशिप इज ओवर बर्तमान आम कौन करवा जो फील्डटा कॉमन फील्ड रखीचे कोटा फॉरेन कीटा ता भीतर सेकेंड टाइम पे रिलेशनशिप पकेबा सो वन रो सिटी को बर्तमान ड्रैग करके स्लोली धीरे धीरे मूवमेंट कर कोड छाड़ली 2 रो सिटी ऊपर से सांगे सांगे गोटे मेसेज देला ए रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट यस और नो ए रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट यस और नो यस दैट इज ट्रू आईडी टू आईडी पकईचे आम कौन सजेशन दूसरी डू यू वांट टू एडिट द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स इफ यू फील दैट you have made some mistakes in the primary relationship you can modify it here modification करया पे हम कौन जीवा yes ता माने हमें जो प्राइमरी रिलेशनशिप ता करिचे पछरे जदि हमें रियलाइज कले यू हैव डन समथिंग रॉन्ग हमें ताकू करेक्शन करया को चाहू कारण दिस इज द लास्ट चेक पॉइंट आपरे एक्सेस तुमको ऑप्शन दबने ताले हमें प्रेस करया कोन yes so that is one part so on the one part तुम कंक्लूड कलो no we have not done anything wrong amara absolutely primary relationship correct what you want to do now apart from the primary relationship same data table भितरे हमें सेकंड टाइम पाई न्यू रिलेशनशिप करिया को चाहूचे या तो मोर प्राइमरी रिलेशनशिप रहिबो ता सहित सेम दीटा टेबल भितरे हमें सेकंड टाइम पाई न्यू रिलेशनशिप करिवा ताले व्हाट आई शुड चूज टू क्रिएट ए न्यू रिलेशनशिप क्लिक नो now tell me should I press yes here or should I press no मोर yes प्रेस करबा दरकार ना no प्रेस करबा दरकार के भावछ yes के भावछ no no कारण जदि करेक्शन करबा yes जदि नुआ रिलेशनशिप करबा no ओके तारे प्रेस कोन कली no एठी बर्तन मु प्रेस कोन करछि दिस इज no तो no कली 1 सेकंड फिर से चेक करिवो को टेबल को फील्ड को आसला टेबल 1 रो सिटी टेबल 2 रो सिटी अगेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक सो क्रिएट सी मोर बर्तमान रिलेशनशिप बॉक्स भीतर 4 टेबल देखेला बट बाम पट को लक्ष्य रख
मास्टर डाटाबेस रे स्टिल 3 टेबल्स आर देयर एटा रिलेशनशिप बॉक्स भितर 4 टेबल एथ पे देखेला से जस्टिफाई कला यस सेम दिरा टेबल भितर सेकंड टाइम पे न्यू रिलेशनशिप तयारी हला देखो S1 नो आईडी टू आईडी सिटी टू सिटी डन नाउ सेकंड थर्ड भितर कॉमन कोन रखछे रोल नंबर टू रोल नंबर तो बर्तन रोल नंबर को ड्रैग करके कोड छाड़ले दिस रोल नंबर अगेन करेक्शन करिया खोले यस नुआ करिया खोले नो पुणी सेकंड टेबल रोल नंबर थर्ड टेबल रोल नंबर अगेन व्हाट क्रिएट आईडी टू आईडी रोल नंबर टू रोल नंबर एटी गोटे समय ट्रिक मन रख तुम केमती कन्फर्म हम तुम 100 दिशा रे जाउछ ना नहीं हमर मास्टर डाटाबेस रे केतरा टेबल अछि तीनटा ताले रिलेशनशिप पर केतरा देखिबो पांचटा विद इन द रिलेशनशिप बॉक्स ना टेल मी यदि मास्टर डाटाबेस रे तमर था 10 टेबल्स मास्टर डाटाबेस रे जे तमर था 10 टेबल ताले आफ्टर मेकिंग द रिलेशनशिप बॉक्स विथ टोटल केतरा टेबल देखिबो yes original 10 plus 9 added then total केते असला 19 got it okay तो एटा हला ट्रिक तमे एठो एक्सेस करि परिबो तमे एक्चुअली ठीक डायरेक्शन में जाउछो कि भूलचुक होछो सो एति बंद समस्त क्लियर ना कार दे किछ कंफ्यूजन अछि को आउथर बुझेबी एवरीबॉडी क्लियर okay so now last part all relationship this is the final linking then close the relationship box and save it kana मैं blank table करथिले table को save करछे relationship पकेले means you have changes you have made some changes so before closing the relationship box all the changes should be saved yes so job done now open table number 1 बर्तन स्टूडेंट नेम तले माउस क्लिक कली एंटर हमर डाटाबेस रे केतरा टेबल करछि तीनटा टेबल्स प्रथम टेबल लो हेडिंग तळे जहा जहा हमर एंट्री करबार थिला यू हैव इनपुटेड बट मोर आउ किछि इंपोर्टेंट हेडिंग रहि जायछि टेबल नंबर 2 किछि 3 रे कारण तीनटा जाक टेबल रे जहा जहा हेडिंग हमें देइछे डाटा हेडिंग अनुसार डाटा पुट कला पर ही जनकर डाटा शीट कंप्लीट हो डाटा शीट कार करछि रमाकांत ओझार तेणु रमाकांत ओझार किसी हेडिंग टेबल नंबर 1 रे अछि किसी 2 रे अछि किसी 3 रे अछि सो माय डाटाबेस इज नॉट एट कंप्लीटेड बट मते डायरेक्ट टेबल नंबर 2 को जिबिनी डायरेक्ट टेबल नंबर 3 को जिबिनी मोर मास्टर टेबल कोडा अछि टेबल 1 जेतरा प्रथम रो रे मोर डाटा पुट हेगला टेबल 1 रो प्रथम रो रे डाटा पुट हेगला दैट इज कॉल्ड व्हाट रेकॉर्ड गोटे रेकॉर्ड मेंटेन हेगला बट सम रेकॉर्ड हैज टू मेंटेन इन टेबल नंबर 2 आल्सो फाइनल टेबल नंबर 3 ओके सो हाउ टू गो देयर प्रेस एंटर की एंटर मारली हमर फर्स्ट रो रे अगेंस्ट रे कोन देखछ एटा प्लस साइन जेतरा प्लस ऊपर मोटे क्लिक करली यू आर इन वेयर you are in the first row of table number 2 so you are in table number 1 but currently entering data in the first row of table number 2 so here access begins हमें 1 ने थाई कि बर्तन सेकंड टेबल को एंट्री कले yes or no सेकंड टेबल ले what is missing city is anything wrong सेकंड टेबल जदी सिटी नहीं किसी गलत है कि एब्सोल्युटली नॉट आमे खाली कॉमन रिलेशनशिप करा पे कॉमन फील्ड देथिले बट सिटी अगेंस्ट रिक्विजिट डाटा ऑलरेडी हमें प्रीवियस टेबल में इनपुट कर सारछे किंतु जेतरा हमें फिजिकली डाटा पुट करा जाउछे आउ सिटीटा से देखेबो ना ओके सो स्कूल बीजेएम क्लास एक्स सेक्शन ए रोल नंबर 12 बर्तन सेकंड टेबल रो अगेंस्ट गोटे देखा अनदर प्लस साइन जितले ए प्लस ऊपर क्लिक करली
बर्तमान मु कोड पहुंचली फर्स्ट रो ऑफ टेबल नंबर 3 फर्स्ट रो ऑफ टेबल नंबर 3 दुई तीन भितर कॉमन कौन रखते रोल नंबर बट रोल नंबर डाटा ऑलरेडी प्रीवियस टेबल रही सारी से थर्ड टेबल से रोल नंबर हमको देखलानी ओके दैट इज आल्सो करेक्ट हाइट 5 feet weight 56 kg vision normal date of birth right just dummy data तुमको रियल फील्ड रे एक्चुअल डाटा पुट करियो पड़िबो ये माइनस ऊपर क्लिक करले तीनटा मर्ज हे गला का दरे दुई रे माइनस ऊपर क्लिक करले दुई तीन मर्ज हे गला का भीतर एक भीतर अल्टीमेटली 1 भीतर 2 2 भीतर 3 एवं सबडा रहिले का भीतर 1 भीतर एवं एठी आईडी नंबर केते आसी गला 1 बाय डिफॉल्ट मोर आईडी नंबर स्टूडेंट 1 फर्स्ट डाटा बर्तन सेकंड पिलर सपोज मु डाटा पुट करछि एठी कोन आसी गला मदन दास एनीथिंग ओके राइट मत एठी दोबारा एंटर मारे दरकार नहीं गोटे थर लिंक अप हो गला परे तुम जेते लिखियो ऑटोमेटिकली से प्लस साइन देखियो केवल प्रथम थर पई गोटे थर हमको एंटर मारियो पड़तला एडी प्लस ओके सो ये प्रोसेस रे तुम जे जनकर डाटा दरकार तुम सब डाटा पुट कर पार ओके सो डाटा एठी हमर हे गला किंतु हमर जो आरडीबीएमएस फॉर्मेट इनिशियली तुम को एक्सप्लेन करथली डाटा को इंस्टेंटली हमको खोजिया को सुविधा हो किंतु एठी बर्तन सेम प्रॉब्लम रही गला रहिला कोन तुमर बर्तन जे जनकर भी तुम डाटाबेस कंप्लीट कर सर के जनकर करछ दी जनकर सपोज गोटे स्टूडेंट रो तुम डेट ऑफ बर्थ जाने चाहो कि आउट स्टूडेंट से तुम पेरेंटल इनफॉरमेशन जाने चाहो आम जानूँ जो तीन टा टेबल करूँ जो इनफॉरमेशन खोजिलु कौन ना कौन टेबल डाटा चार दे बट दैट इज इन टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 आम मन रखाटा संभव नहीं तेना आम एक्सेस करके सीना डाटाबेसटा तैयारी करदे आम इंस्टांटली डाटा को बर्तमान केमती खोजा इंस्टांटली डाटा को खोजिया को आम गोटे अनदर कमांड देवा पड़ो से कमांडर ना है कोरी कोरी QUERY कोरी मीन्स व्हाट इंक्वायरी इंक्वायरी गोटे पर्टिकुलर फील्ड इन ए पर्टिकुलर टेबल्स सो इंक्वायरी फेज रे यू नीड नॉट हैव टू री एंटर एनी डाटा आमको दोबारा डाटा किसी लिखा दरकार नहीं आम जहाँ करें ता भर जहाँ विषय आम इनफॉरमेशन दरकार आम ता विषय इंक्वायरी करुचे क्रिएट क्रिएट रो बर्तमान मूवमेंट करवा कोरी विजार्ड टेबल तैयारी करके डाटाबेस रिलेशनशिप कले प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप कले डाटाबेस तैयारी कले बर्तमान गोटे पर्टिकुलर इनफॉरमेशन आम चाहूँ से यू आर मेड एन इंक्वायरी सो इंक्वायरी करने आमको ये फास्ट पार्ट रे कारण इंक्वायरी विभिन्न पार्ट अच्छी फास्ट लेसन आम लर्न करवा कोरी विजार्ड सेकेंड आम देखा कोरी डिजाइन थर्ड पार्ट आम एसक्यूएल कोरी करवा सो कोरी विजार्ड विजार्ड माने कौन गोटे हेल्पिंग हैंड समवन इज देयर जी का हमको गाइड कर नबो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड हाउ टू डू द जॉब वन केमते हम काम करे सो दैट इज द पर्पस ऑफ विजार्ड यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम थर्ड पार्टी ओके राइट सो कोरी विजार्ड रा मूवमेंट करिया कोटू को सिंपल कोरी विजार्ड रो हमें मूवमेंट कले सिंपल कोरी विजार्ड रो हमको मूवमेंट करवा सिंपल कोरी विजार्ड राइट ओके नाउ सी ये बर्तमान तुम कोरी विजार्ड रो फॉर्मेट देखुछ एटा को टेबल देखुछ टेबल 1 जहाँ जहाँ हेडिंग थिला हेडिंग शो करुछ सो करेंट टेबल दीज आर द हेडिंग्स
एंड दिस इज द क्वेरी बॉक्स तेणु तुम पाखे जो सब फिल्ड डिस्प्ले आसला तुम सांगे सांग जहाँ विषय जाना चाहो खोजी पाई मुझ सब नेम विषय क्वेरी कली ये सिंगल फरवर्ड क्लिक कली जब गलती पड़े सिंगल रिभर्स आर क्लिक कली जब सब जाक फिल्ड ना चाहूँ डबल फरवर्ड क्लिक कली सब पुणी रिभर्स डबल बैकवर्ड भी क्लिक कली बट आमर तो डबल नंबर किसी माने ना कारण टेबुलटा 1 सेकेंड लेंथी हो बी स्पेसिफिक किसी फिल्ड आम नवा बराबर सो ना तो नवा निश्चय ना को नेली ये स्टेट को नौ सो प्रथम टेबुल ये दुटा फिल्ड विषय मुझे क्वेरी कली फास्ट टेबुल मु दुटा फिल्ड विषय क्वेरी करुच्ची बर्तमान मूव टू टेबुल नंबर 2 जदि टेबुल नंबर किसी फिल्ड विषय मुझे जाना चाहूँगी देवी ना आई कैन स्कीप इट मु सब टेबुल फिल्ड नेबी बोली सेमती किसी माने ना से मतलब ऑप्शन पर ऑप्शन देखौछि मते चूज करे पर व्हाट आई एम लुकिंग एट मु कोन खोजुछि राइट सो एठु नेली सिटी देन स्कूल ऑफ कोर्स ओके सो सेकंड टेबुल एतिकटा फिल्ड नेले पुनी थर्ड टेबुल को आसिली थर्ड टेबुल मु नौछि रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ so after all what is query is all about so it is nothing but the summary of all the tables that you have created आमे मे भी सब टेबुल सब फिल्ड एक कारण न देखि पारू बट आमे जिस्टा तो पाई फेरिबा जो विषय स्पेसिफिक हमन इंफॉर्मेशन दरकार सो तीनटा टेबुल एति फिल्ड विषय क्वेरी कली नेक्स्ट एंड फिनिश सी ओके तेणु मु जहाँ जहाँ क्वेरी करथिली से डाटा डिस्प्ले आसला तुम 1 सेकेंड ये फिर से क्वेश्चन आसीपे मोर डाटाबेस के जनकर डाटाबेस करी 2 जनकर तुम कह ना मोर स्पेसिफिक गोटे स्टूडेंट ये दरकार था किंतु से कौन है सबको एक्सट्राक्ट करके नहीं आसी तो आम बर्तमान कौन करवा जो 2 जनकर डाटा नहीं आसी फिर से फिल्टरिंग करवा फिल्टर माने कौन आउट ऑफ मेनी थिंग्स पर्टिकुलर डाटा को आउट स्पेसिफिक करवा सो ये जो डाउन और सिंबल देखुच दिस इज द फिल्टरिंग लिंक आगे सिलेक्ट ऑल ऑन चेक करो मोर कहार डाटा दरकार मदन दास दरकार तो मदन दास को चॉइस कली ओके कली सो करो मदन दास डाटा भी होला ओके सो 3 टेबुल को हमें स्क्वीज करके गोटे क्वेरी को नहीं आसिले क्वेरी रो पुणी फिल्टर करके स्पेसिफिक पॉइंट रे आसी पहुंची गले ओके सो दैट इज एक्सेस इज ऑल अबाउट तमे आउट ऑफ मेनी थिंग फ्रॉम ए वेरी 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 बिग डाटाबेस तमे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को विद इन सेकेंड्स लुकआउट करके तुम लोकेशन में पहुंच पार ओके सो एति पर्यंत समस्त क्लियर ना एनी कन्फ्यूजन कार अच्छी बर्तमान तुम एक्सेस रो कारण एक्सेस रो आज का मार्केट रे इट हैज वास्ट एप्लीकेशन से पार्ट तो हमें पछर लेटर फेज रे जीवा खाली जस्ट शॉर्ट रे कहि दोछि नाउडेज यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ रजिस्ट्रेशन अप टू डेथ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रे रजिस्ट्रेशन करछो पढ़िया पय हो चाकरी पय हो फूड ऑर्डर दो एवरीथिंग ऑनलाइन रे जते तुम अप्लाई नाउ रजिस्टर नाउ क्लिक करछो गोटे ब्लैंक फॉर्म बाहर तापर तुम फिलअप कर कौन कर सबमिट कर चिंता कर एंटायर फॉर्म को प्रोग्राम में तैयारी इट इज मेड बाय एक्सेस टोटाल ऑनलाइन तुम जिते जॉब और काम हो सब एक्सेस रे ही फॉर्मेट रे काम हो जीवा आमर 3-4टा लेसन पर आम ऑनलाइन फॉर्म पार्ट को मूव ऑन करवा ओके ता आगुरु तुमको आजिकार लेसन तो सरला तो गोटे प्रैक्टिकल छोट एग्जांपल देखौ एक्सेस रे केते भास्ट काम करा जाय पारे गोटे आम मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी से एजेंसी ना कौन लिखा है नॉर्थ विंड ट्रेडर्स कंपनी देख नॉर्थ विंड ट्रेडर्स गोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ को लोक मैंने ऑर्डर नौ
जिनस भी पार्टी डेलीवरी करुच्ची पेमेंट पाऊँ ट्रांसपोर्ट रे जाऊँ एंटायर स्ट्रक्चर टाक एक्सेसर केमती लिंकअप कराई देख एवढा टेबुल आम बर्तमान फास्ट पार्ट रे अच्छे टेबुल आम कोरी कुआज अल्प टे देखीचे तुम लास्ट पार्ट तुम रिपोर्ट सर रिपोर्ट है प्रिंटिंग गोटे कस्टमर टेबुल देख सो दिस इज रियल लाइफ जॉब वर्क एक्सेस रे तुम कोड़ा डाटा सीट मेंटेन होची जस्ट हैव ए लुक दिस इज कस्टमर टेबल्स company name, last name, first name, email address, job title, fax number, address, city, state, web page, notes, etc. etc. Customer रो complete detail आधरे fill up कराई right बर्तन मार्क करो कस्टमर टेबल को कार साथ लिंक कराई कस्टमर कौन दबो ऑर्डर कस्टमर कौन दबो So we consider ourselves, I am the Northwind company, I am the manufacturer. मो कस्टमर मत ऑर्डर दूसरी मु कस्टमर बेसिक डिटेल पाई गोटे टेबल कली बराबर बर्तमान कस्टमर मत कौन कर ऑर्डर दूसरी तेणु ऑर्डरटा को बेसिस दूसरी मोर कंसर्न को ऑफिसर ऑफ पार्टी टू ऑर्डरटा रिसीव कला कस्टमर सारे टर्म कंडीशन कौन फाइनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ताप गोटे ऑर्डर टेबल भी तैयारी कराला तेणु कस्टमर टेबल क्या लिंक कला ऑर्डर टेबल मोर कंपनी स्टाफ है नांसी फ्रीयर सी रिसीव कला को डेट रे सी रिसीव कला शिप डेट शिप भाया शिप माने कौन ट्रांसपोर्टेशन ओके ट्रांसपोर्टेशन शिप भाया शिपिंग नेम शिप एड्रेस शिप सिटी कोठू को जाउची शिप कंट्री शिपिंग फी टैक्स इफ एनी पेमेंट टाइप कस्टमर साने कौन टर्म कंडीशन फाइनल से कार्ड दबो कि चेक दबो कि कैश रे पेमेंट दबो एवरीथिंग को डेट रे कस्टमर हमको पेमेंट करिछि किबा करिवो ओके टैक्स रेट किसी एप्लिकेबल जीएसटी वगैरह अच्छी कि स्टेटस आईडी सो स्टेटस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटस माने कौन इनवॉइस शिफ्ट क्लोज कस्टमर हमको ऑर्डर देला आम कस्टमर को एग्री कले यस आम तुमको जिनस सप्लाई करूँ सप्लाई है बिलिंग से स्टेज रे अच्छी दैट इज कहा जाए इनवॉइस ट्रांसपोर्ट रे अच्छी दैट इज कॉल्ड शिफ्ट ताने कस्टमर आमको ऑर्डर देला आम ताना बिल तैयारी कले जिनस पठेले कस्टमर जिनस रिसीव कला ना द डील इज क्लोज्ड ओके तेणु प्रति स्टेज रे जदि पछरे कस्टमर क्लेम करियो बाबू तुमको ऑर्डर देथि तुम के मते जिनस देलनी तुम स्टेटस देखे दो बाबू तो ए डेट रिसीव करछु तो स्टेटस बर्तन क्लोज अछि एसेट्रा बर्तन ऑर्डर कस्टमर कौन दबो कस्टमर क्या ऑर्डर देला मु ऑर्डर देली मोर कंसर्न स्टाफ पार्टी टू ऑर्डर रखिला ऑर्डर अनुसार डील फाइनल हो गला बट व्हाट टू बी ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ताने कस्टमर टेबल लिंक कला क्या ऑर्डर टेबल क्या लिंक करिबा प्रोडक्ट टेबल सो बर्तन एक्विजिट प्लस ऊपर क्लिक करछि से मोर कोठी आसी गला प्रोडक्ट ओके केते क्वांटिटी ऑर्डर दोछि केते रेट रे ऑर्डर दोछि किछि डिस्काउंट प्रोविजन होछि स्टेटस आईडी allocated invoiced shipped on order no stock मु कस्टमर रो ऑर्डर रखिली सॉरी मो पाखे स्टॉक नहीं मु दे परिबिनी तमे जदि वेट करिवो ताले ए दिन भीतर सप्लाई कर परिबो कस्टमर कला नहीं मोर अर्जेंट दरकार अछि मु नेबिनी मु अलग जगह उठै देली दैट इज क्वाइट पॉसिबल
तेणु तुम स्टाटस कौन आसला कस्टमर ऑर्डर देता आम कस्टमर टू ऑर्डर रिसीव करते बट आम पाखे स्टॉक नाला बोली आम सप्लाई करें सो दैट इज नो स्टॉक ऑन ऑर्डर कस्टमर आमको ऑर्डर देती वी हैव स्टॉक बट वी आर कंसीडरिंग वेदर टू सप्लाई हिम और नॉट आम सप्लाई करूँ कि न करूँ आम डिस्कशन लेवल अच्छु एपन जाए सप्लाई है इनवॉइस माने कौन बिलिंग इनवॉइस आगु कौन हम आलोकेटेड आम डिस्कसन कलु आमर मैनेजमेंट कमिटी डिसाइड कला येस कस्टमर सागर आम डीलटा फाइनाल हो जाए आम पाखे स्टॉक अच्छे आम ए डेट सुधा डेलीवरी करूँ सो दैट आम ऑर्डरटा रखा ऑर्डरटा रखिलु माने कौन आलोकेट कलु येस आम डिसाइड कलु कस्टमर को जिनस आम दबु जमी आलोकेट है कस्टमर ना बिल तैयारी जो बिल तैयारी कस्टमर ना ट्रांसपोर्ट जिनस पड़ो सो दीज आर द स्टेजेस डेट ऑफ allocation परचेज ऑर्डर कस्टमर को दिन ऑर्डर देला इन्वेंटरी आईडी इन्वेंटरी माने कौन स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो मे भी तुम ये मार्क कर ये जो तुम टेबुल संख्या देखुच ये जो छोट छोट बॉक्स देखुच अप टू केतटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बट इट इज नॉट नेसेसरी 20टा टेबुल को गोटे लिंक करके जीवाटा दरकार मोर डाटाबेस अंडर 20 टेबुल थाई पारे किंतु जो टेबुलटा जी साल दरकार ये मोर कौन है कस्टमर लिंक कला क्या ऑर्डर ऑर्डर टेबुल क्या लिंक कला प्रोडक्ट बस दैट्स ऑल से आम दरकार किंतु डाटाबेस आम जिते टेबुल थाउ किसी असुविधा नहीं मुझे तुमको एग्जांपल गोटे देखली 1 2 3 बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी तुम डाटाबेस मे बी 100 टेबुल थाई पारे बट जो टेबुल जो साथ रिलेशनशिप आमर जिनसटा फ्रुटफुल हम आम से रिलेशनशिप करा ओके यहाँ गोटे स्मॉल एग्जांपल देखिल तुम रियल लाइफ केमती कम हो गोटे छोट एग्जांपल देख डाटाबेस टूल्स एत सारे टेबुल रिलेशनशिप पर रिलेशनशिप बॉक्स केम देखा पूरा बुढ़ियाणी जाल ओके बट इट इज नॉट सो टफ जब सिस्टमेटिक जो ऑर्डर तुमको एक्सप्लेन कली जब तुम से ऑर्डर सिस्टमेटिकली गोटे करके जीव लास्ट को तुम देखबार ये शोई ओके सो आउ जदि कार किसी क्वेश्चन अच्छी पचार दिस इज जस्ट ए टोकन एग्जांपल व्हाट द रियल लाइफ एप्लिकेशन ऑफ एक्सेस इन आवर डेली डे टू लाइफ ओके आमे आगुरु जोटा लेसन डिस्कशन कले जदि कार किसी क्लारिफिकेशन दरकार पचार क्लियर समझते अच्छा ओके ठीक अच्छे चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करो